everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your operating system class, जो कि आपका operating system class है। और आपका क्लास नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्लास नंबर आपका 2 है, जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर लिया है, जो क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम क्लास 1 कर चुके हैं। दिस इज़ योर क्लास नंबर 2। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास है। लास्ट क्लास मैंने एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया था, जिसमें मैंने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उसके साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर के ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका वीडियो का यूटिलाइजेशन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँच सके। Now for the today's class we'll start discussing about multi-programming operating system. Then उसके बाद हम multitasking को discuss करेंगे. What are the multitasking? What are multi-programming? Then we'll discuss your real-time operating system, main features of real-time operating system, as well as we will discuss three levels of the advantages of operating system. Okay, and the service provided by the operating system. All these we'll discuss here, and in the next class we'll discuss further more topics with respect to the operating system. ओके, सो तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी प्रोसेसर हम लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही आप समझ रहे होगे कि एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। With respect to the multi-programming operating system, the multi-programming operating system divides the transient area to store the multiple programs and provide resource management to the operating system. Basically अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हर एक एरिया जहाँ पे आपका मल्टीपल प्रोग्राम स्टोर हुआ है, उसको अलग अलग एरिया में वो आपको ब्रेक कर देगा, या कह सकते हो मल्टीपल प्रोग्राम्स बना देगा, जहाँ पे वो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। When two or more programs are in the memory at the same time, sharing the processor is referred to as multi-programming operating system. तो exact definition अगर हम बात करते हैं multi-programming operating system की, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो programs होते हैं मेमोरी में एक सेम टाइम पे, एक इंस्टेंट पे, एक सेम टाइम पे दो या दो से प्रोग्राम्स जो हैं आपके मेमोरी में जो एक टाइम पे हैं, जो शेयर कर रहे हैं प्रोसेसर को, दैट आर रेफर टू एज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. With respect to the multi-programming operating system, the multi-programming operating system do not provide user interaction with the program. तो multi-programming operating system जो है वो आपको provide नहीं करता user interaction program के साथ user interaction नहीं होता multi-programming में. Multi-programming assumes a single process that is being shared. It increases the CPU utilization by the organizing job so that the CPU always has one to execute. Multi-programming की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग एक अजम्पशन है, जहाँ पे एक अज्यूम किया जाता है जो सिंगल जो प्रोसेसर होता है दैट इज़ बीइंग शेयर्ड, वो एक सिंगल प्रोसेसर जो है वो शेयर्ड किया जाता है और वो इंक्रीज़ करता है सीपीयू यूटिलाइजेशन को। जो हमें जॉब्स असाइन की जाती, जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन किया जाता है, CPU ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट, एक एट अ टाइम वो एग्जीक्यूट करता जाता है, और जिस तरह से उसको जॉब्स असाइन की गई होती हैं वो CPU यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है. Okay, with that the concurrent execution of program improves the utilization of system resource. System resource को अच्छा यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है with the improve of that particular program. जो कि concurrent executions हो रहे थे, जो concurrent execution होते हैं of that particular program, that improves the utilization of that system resource as well. What is resource management is with reference to the multi-programming operating system. So resource management is the main aim of multi-programming operating system. resource management जो है वो एक main aim है multi-programming operating system के लिए, फाइल सिस्टम के लिए, कमांड प्रोसेसर के लिए, इनपुट आउटपुट सेंट्रल
कंट्रोल यूनिट के लिए एंड ट्रांसिएंट एरिया एंड द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट के रेफरेंस में बात करते हैं तो रिसोर्स मैनेजमेंट एक मेन फोकस है, मेन एम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फाइल सिस्टम जो है, कमांड प्रोसेसर जो है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट जो है, ट्रांसिएंट एरिया जो आपका एग्जीक्यूट करता है, एसेंशियल्स जो कंपोनेंट्स देता है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, सारे फुलफिलमेंट करता है। नाउ विल सी व्हाट हाउ you can define multi-programming operating system by a diagram, so that we will discuss here. So this is the architecture of multi-programming operating system memory layout. ये आपका multi-programming operating system का memory layout है, जिसमें आपको operating system kernel यहाँ पे दिख रहा होगा। एक operating system kernel होता है, फिर वो program 1 assign किया, program 2, program 3, फिर उसके बाद वो free करता है उस space को, जब 3 program आपके हो जाते हैं। उसके बाद फिर program 4, program 5 और उसके बाद free space। तो इसी तरह से program assign किए जाते हैं, jobs assign की जाती हैं multi-programming operating system में। असाइन होने के बाद जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं वैसे वैसे वो फ्री स्पेस करता रहता है। नाउ मूविंग ऑन विद रेस्पेक्टिव टू विद रेफरेंस टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आफ्टर दैट विल हैव टू स्टार्ट विद मल्टीटास्किंग। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में आपको समझ में आ रहा था कि मल्टीपल प्रोग्राम जो है एक एट इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे असाइन किए गए हैं और ये वो अपडेट करते हैं एट द सेम टाइम। ऐसे ही सेम मल्टीटास्किंग के साथ भी है। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्क मतलब है एक से ज़्यादा जो टास्क है वो आपके एक पर्टिकुलर टाइम पे, जहाँ पे टाइम शेयरिंग हो रही हो, वो या फिर टाइम के साथ हमारा जो मल्टीटास्क है वो ऑपरेट करेगा, फुलफिल करेगा। सो विद रेफरेंस टू दैट मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके अगर आपको पता है तब भी, और अगर आपको नहीं पता है फिर तब भी। तो मल्टीटास्किंग जो होता है दैट इज ऑल्सो called as time sharing. This I can highlight this. So time sharing operating system, basically जो मल्टीटास्किंग है वो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। आपको मल्टीटास्किंग करके भी पूछ सकते हैं, या फिर दे विल आस्क यू टाइम डिफाइन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन दिस केस अगर वो इस तरह से भी बोलते हैं तो भी आपको मल्टीटास्किंग को ही डिफाइन करना है, दैट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके सो मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन, ये एक मल्टीटास्किंग लॉजिकल एक्सटेंशन है ऑफ दैट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरेक्शन विद प्रोग्राम इज पॉसिबल इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो यूज़र प्रोग्राम है आपका, ओके तो जो यूज़र प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं जो कि लॉजिकल एक्सटेंशन है बेसिकली, अगर मल्टीटास्किंग की बात करते हैं और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जस्ट एक्सटेंशन है, थोड़ा सा एडवांस्ड है, जो कि यूज़र इंटरेक्ट करता है प्रोग्राम के साथ इन अ पॉसिबल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पर्टिकुलर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोग्राम जो है वो यूज़र के साथ शेयर करता है, जैसा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं था कि वो यूज़र प्रोग्राम के साथ नहीं शेयर करता है, और दे आर नॉट collaborating with each other and they cannot be see the program as well in the multi-programming case. But in the case of this multitasking, it could be shared within the time sharing operating system. Next, with your reference to the multitasking here, during an execution of a program, user interacts directly with the program, supplying the information to the program. Basically जैसा कि पहले मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था, मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हैं या फिर इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ मल्टीटास्किंग, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का, तो जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है प्रोग्राम के साथ, सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्राम, और इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रोग्राम ओनली। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग मीन्स, अब मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है? दैट द कंप्यूटर कैन वर्क विद मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स के साथ काम कर सके उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, एक ही टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र could be working with the information from one database of the screen and analyzing the data, while the computer is sorting the information from the another database, while an Excel sheet is performing to calculation on the separate worksheet. तो एक तरह से ये हो सकता है कि जैसे कि हम एक में अपना डेटा चेक कर रहे हैं और एक में एक्सेल शीट का फॉर्मेशन बना रहे हैं विद डिफरेंट डेटाबेस, तो उस तरह से मल्टीटास्किंग जो है वो आपका कंप्यूटर जब एक से ज़्यादा काम आपका एक ही टाइम पे कर रहा होगा, दैट इज़ नोन एज मल्टीटास्किंग हियर।
Now the next point for the multitasking here, many users shares the computer system simultaneously in time sharing operating system. बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि अपना कंप्यूटर सिस्टम एक ही साथ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू शेयर करते हैं. टाइम शेयरिंग सिस्टम यूजर्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होते हैं वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग को यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं. ईच यूज़र हैज़ एट लीस्ट वन सेपरेट प्रोग्राम इन मेमोरी. मेमोरी में हर एक यूज़र के पास एक अलग सेपरेट उसका खुद का प्रोग्राम होता है in the case of multitasking here. Now moving on to the next that we have here with respect to the multitasking as well. With reference to the multitasking here, the concepts of virtual machine, if I'm talking about the concepts of virtual machine, is used in time sharing system. It creates a virtual machine. One processes user interaction with the system by using the virtual machine. User enters the command for the virtual machine, results in the received back to the user. In the case of the concepts of virtual machine की अगर हम बात करते हैं, वो टाइम शेयरिंग सिस्टम को यूज़ करता है. उसके साथ साथ वो क्रिएट करता है वर्चुअल मशीन को एक वन पर यूज़र पे. एंड यूज़र इंटरेक्शन विद दिस सिस्टम बाय यूजिंग द वर्चुअल मशीन. यूज़र एंटर्स द कमांड फॉर द वर्चुअल मशीन, रिजल्ट्स विद रिसीव्ड बैक टू द यूज़र एज वेल. Okay, with this case, now moving on with the next point with reference to the multitasking here. टाइम शेयरिंग अब यहाँ पे मैं मल्टीटास्किंग वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ. इट डज नॉट मीन कि मैं टाइम शेयरिंग की बात कर रही हूँ. ओके, ये दोनों ही सिमिलर है. इधर वी विल टॉक अबाउट मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम. दीज वर द टू इक्वल थिंग एंड टू डिफरेंट नेम with for a one process only, for the one system only. And so multitasking और time sharing system more complex than multiprogramming. क्योंकि ये थोड़ा एडवांस एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग का, इस वजह से ये थोड़ा कम्प्लेक्स भी है एज कम्पेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो टेक्स हेल्प्स ऑफ अ फाइल system stored on the disk, so the disk management is also required. क्योंकि अगर हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम की या मल्टीटास्किंग की, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है एज़ कम्पेयर टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि ये जो है आपका वो आपका फाइल सिस्टम को भी हेल्प करता है, वहाँ से भी हेल्प लेता है. इसलिए फाइल सिस्टम जो स्टोर होता है डिस्क में, उसको डिस्क मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द केस ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग. इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है बिकॉज ये एक्सटेंशन भी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का. Multitasking is also called as time sharing operating system that I had said you. It is a logical extension of the multi-programming of the operating system. User interaction with the program is possible in the time sharing operating system that I had explained you about the multitasking. That is also known as the time sharing operating system, and it is a logical extension of multi-programming operating system where the user can interact with the program as possible with the time sharing operating system. During the execution of program, user interacts directly with the program, supplying information to the program. When we are using your time sharing operating system that uses CPU scheduling and multi-programming to provide economical interactive use of a system, the CPU switches rapidly from one user to another. That is, the CPU is assured between the number of interactive user instead of having a job defined by the spooled card image. Spooled क्या होता है, I will tell you about spooling in the next class. So spooled card images, each program reads in the next control instruction for the terminal output in the normally printed immediately on the screen. जब हम CPU scheduling यूज़ करते हैं या जब हम multiple programming यूज़ करते हैं to provide the economical interactive use of that particular system, CPU switches rapidly from one user to another. एक यूज़र से CPU स्विच करके दूसरे यूज़र पे आ जाता है बिकॉज दैट्स द रीज़न कि CPU जो है वो शेयर करता है बिटवीन नंबर ऑफ इंटरेक्टिव यूज़र्स. इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो जॉब डिफाइन किया जाता है स्पूल्ड कार्ड इमेज को या हर एक प्रोग्राम को रीड करता है वो हर नेक्स्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को एक टर्मिनल से, तो वो आउटपुट जो है वो नॉर्मली प्रिंट करता है. जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देता है. Now moving on with the next that we have with reference to the multitasking here.
सो आफ्टर द मल्टीटास्किंग विल स्टार्ट विद द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिससे हम शॉर्ट में RTOS भी बोलते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS भी बोला जाता है। सो रियल टाइम सिस्टम्स आर यूजुअली डेडिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं ये यूजुअली डेडिकेटेड होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। They typically read from and read back and react to the sensor data। ये typically read करते हैं और जैसे ही read करते हैं वो react करते हैं उस particular sensor data पे। The system must guarantee response to the events within the fixed period of time to ensure correct performance। इसी वजह से जो सिस्टम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो गारंटी करता है कि वो फ़ौरन ही रिस्पॉन्स बैक करेगा जैसे ही वो रीड कर लेता है सिचुएशन को with a fixed period of time to ensure the correct performances while they are dealing with the problems, the typical problem that they are reading it. In a real-time system, each process is assigned by a certain level of priority according to the relative importance of the event it processes. The processor is normally allocated to the highest priority process among those which are ready to execute. Higher the priority process usually preempts execution of the lower priority process. This form of a scheduling called priority-based pre-competitive scheduling that is used a majority real level system memory management meets at a real-time operating system. There is a lattice swapping of program between the primary and the secondary memory। अगर हम रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस जो असाइन किया जाता है एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रायोरिटी पे, जहाँ पे आपका जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस होता है even its processes, this process is normally allocated to the highest property process as well as among these which are ready to execute। जितना ज़्यादा हायर प्रायोरिटी प्रोसेस होगा प्रीम करेगा एग्जीक्यूशन, जितना लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस होगा this form a scheduling that is called the priority based preemptive scheduling, and that is used in the majority of the real time system memory management। in a real time operating system there is a lattice swapping, जहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप करता है। RTOS, that is real time operating system, supports deterministics, that is timing operating system services, ensures only known and expected amount of time। जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम। अगर हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दैट सपोर्ट द टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज कंज्यूम ओनली known and expected amount of time। जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नॉन डिटर्मिनिस्ट। जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जनरल वाला, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइमिंग पे डिपेंड करता है, बट रियल टाइम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका डिटर्मिनिस्टिक टाइमिंग पे डिपेंड करता है। क्लास तो इस तरह से आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने पॉइंट्स को। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव हियर, services can inject random delays and hence alter execution time। in the general purpose operating system, service can inject random delays into the application software and thus cause the slow responsiveness of the application at an unexpected time। अगर हम services की बात करते हैं that can inject the random delays, okay, and hence even though they have can alter the execution time as well। general purpose operating system services की अगर हम बात करते हैं that injects the random delays into the application software and the cause that slow responsiveness of that particular application at an unexpected time here। Now moving on with the next that we have here, इन द जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम GPOS बोलते हैं, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS बोलते थे, तो उस तरह से जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम को GPOS बोलते हैं। दैट आर असाइंड फॉर रियल फास्ट टास्क। रियल फास्ट टास्क के लिए असाइन किया जाता है, सच एज ऑफलाइन सिमुलेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल मॉडल्स दैट शुड फिनिश एज सून एज पॉसिबल। Interfacing hardware at a given rate required instead maximizing time determinism for which a real-time operating system that is RTOS are designed। इसीलिए जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिज़ाइन किया गया था रियल फास्ट टास्क के लिए, जैसे कि आपका ऑफलाइन सिमुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर फिजिकल मॉडल्स जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल मॉडल्स हो गए उनके साथ डील करने के लिए आपका जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन किया गया था। फॉर दैट
should be finished as soon as possible. But इंटरफेसिंग हार्डवेयर की बात करें, एक गिवन रेट जो रिक्वायर्ड था मैक्सिमाइज करने के लिए टाइम डिटर्मिनिज्म को, उसके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया. Now moving on with the next, that is main features of a real time operating system. So what are the main features of real time operating system? Here you can conclude with this. The first main feature of a real-time operating system is context switching. Latency should be short. Context switching होनी चाहिए and the latency, context switching latency should be short. तो जो context switching थी आपकी latency की, वो short होनी चाहिए. The second point with reference to this, the time taken between executing the last instruction of the interrupted task and executing the first instruction of the interrupted handler should be predictable and short. This is also known as interrupt latency. जो टाइम लग रहा होता है एग्जीक्यूशन में, जब लास्ट इंस्ट्रक्शन आपका इंटरप्ट टास्क का जो जाता है एग्जीक्यूट करता है, तो वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, फिर उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर जो है वो प्रेडिक्टेबल आ जाता है कि हाँ दिट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस. तो उस तरह से उसी को ही हम इंटरप्ट लेटेंसी कहते हैं. Similarly, the time taken between the executing the last function of the interrupt handler and the executing the next file should also be the short and predictable. This is also known as interrupt dispatch latency. Interrupt latency, so you will you know that कि last instruction जब हम execute करते हैं, फिर उसके बाद interrupt task आता है जो interrupt handler use करता है, that was known as interrupt latency here. But in the same case जो time लेता है between the executing file, लास्ट इंस्ट्रक्शन जो इंटरप्ट हैंडलर लेता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं नेक्स्ट टास्क में, दैट शुड बी इन द शॉर्ट एंड प्रेडिक्टेबल. दैट इज ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट केस वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरप्ट लेटेंसी विद दैट इज प्रेडिक्टेबल एंड शॉर्ट. But this is also known as the interrupt dispatch latency that you have to understood, and this is the definition of interrupt dispatch latency, and this is interrupt latency here. With an RTOS, that is real time operating system, should have support for multitasking and task preemption. So basically real time operating system की अगर हम बात करते हैं, that should have a support, उनके पास support होना चाहिए for the multitasking and the task preemption. With reference to the multitasking and task preemption, that we have real time operating system but support kernel preemption, where in a process in kernel can be preempted from some other process. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका सपोर्ट तो करता है कर्नल preemption को, where process in kernel that can be preempted by the some other process as well. Now moving on with the next, that we have to discuss with reference to the real time application and with their examples, of course, that we are dealing with the real time, or what are the real time and with their having an example, and then we'll start with the advantages of batch processing system that we had discussed in the last class, that about the batch system. So here it is with reference to the real time application and with their example. So real time application क्या है? पहला real time application है detection radar system. Detection radar system real time application है, उसका example है आपका burglar alarm and radar system. This is the two example related to the detection radar system. Next, the second one is your process monitoring and control. So process monitoring and control is an example of your पेट्रोलियम एंड पेपर मिल जो है आपका प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का एग्जांपल है, जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन है. द थर्ड वन इज योर कम्युनिकेशन. दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. सो कम्युनिकेशन के रेफरेंस में एग्जांपल्स आपके हैं टेलीफोन switching system in an example of communication. Next is your flight simulations and control. Then we have autopilot shuttle mission simulate. And अब last is your transpiration. The transpiration में है आपका traffic light system, air traffic control. So, okay, so in the case of the real time application we have some of examples here. So real time application में आपका पहला है detection radar system, जिसका example है burglar alarm radar system. Second is your process monitoring and control, examples is petroleum and paper mill. Third is your communication, example is telephone switching system. Fourth is your flight simulation control, that is autopilot shuttle mission simulate. And the fifth is your transpiration, that is traffic light system and air traffic control.
Now moving on to the advantages of batch processing system here. Advantages of batch processing system क्या होता है? पहले तो batch processing system I had explained you in the last class. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जाके गो थ्रू कर लो, बिकॉज अभी हम लोग सेकेंड क्लास में ही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सो एज सच आपका कोई लॉस नहीं हुआ है. प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके गो थ्रू कर लो, सो दैट आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाए, सो यू कैन कवर अप ऑल द points in all the topics starting from the operating system, as well as whatever the subjects you are learning it, you can just go through with that. So advantages of batch processing system, the first point is move much of the work of the operation to the computer. सो मूव मच ऑफ द वर्क ऑफ द ऑपरेटर टू द कंप्यूटर. तो जितना ज़्यादा हम वर्क ऑपरेटर कंप्यूटर के थ्रू करते हैं ऑपरेटर के थ्रू, सो वो सारी चीज़ें आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में है, पहला एडवांटेज. Second advantage is that increased performance since it was possible for job to start as soon as the previous job finish. तो इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीज़ करता है परफॉर्मेंस को, क्योंकि वो पॉसिबल होता है जॉब के लिए कि जैसे ही स्टार्ट करें हम जॉब को, उसको ही हम प्रीवियस जॉब को भी फिनिश करके ही आपका स्टार्ट कर दिया जाता है. बैच सिस्टम ऑफन प्रोवाइड सिंपल फॉर्म्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट. तो बैच सिस्टम जो होता है वो ऑफन आपको प्रोवाइड करता है सिंपल फॉर्म्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट हियर. The second, the next is your batch system do not require only time critical device management. तो batch system को सिर्फ और सिर्फ टाइम क्रिटिकल डिवाइस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, एंड द शेड्यूलिंग इज़ ऑल्सो सिंपल. और शेड्यूलिंग भी जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें आपका जो शेड्यूलिंग है वो भी सिंपल होता है इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. एंड जॉब्स आर प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ सबमिशन, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज़ FIFO. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो होता है फीफो, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व दैट इज FCFS. तो दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फैशन का मतलब होता है जो पहले आया उसको पहले इसका टास्क कंप्लीट करने को दिया, देन आफ्टर दैट जिस सीक्वेंस में जो आया उस सीक्वेंस में वो आपका असाइन किया जाता है. ठीक है, उसी तरह से उसको कंप्लीट भी किया जाता है. Now moving on to the next with reference to the batch processing system. After that we're dealing with some of the things related to the operating system. With reference to the time sharing system, here we are dealing with time sharing system. What are the time sharing system and what is the process of time sharing system? Time sharing system allows many users to simultaneously share the computer resource. Since each actions or a command in a time shared system take a very small fraction of time, one a little CPU time is scheduled is needed for each user. हम टाइम शेयरिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है बहुत सारे यूज़र्स को कि वो साइमल्टेनियसली शेयर कर सकता है कंप्यूटर रिसोर्स को विद सच दैट देयर एक्शन देयर कमांड विद द टाइम शेयर सिस्टम टेक अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही कम टाइम लेता है, ओनली फॉर अ लिटिल CPU टाइम, थोड़ा सा CPU टाइम लेके, इज नीडेड फॉर ईच सब यूज़र, हर एक यूज़र के लिए वो नीडेड होता है. As the CPU switches rapidly from the users to the another user, okay, each user is given impression that he has his own computer while it isn't actually one computer shared among many users. Memory management is time sharing system provides the protective and the separation of user program. Most time sharing system use time slice, that is round robin scheduling of a system. बेसिकली अगर हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू द CPU स्विचेस की बात करते हैं तो CPU स्विचेस जो है वो रैपिडली आपका यूज़र एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे स्विच करता है, एज आई सेड यू बिफोर ऑल्सो. सो वहाँ पे हर एक यूज़र जो है वो अपना इम्प्रेशन को देता है अपने ओन कंप्यूटर के थ्रू, और जहाँ पे एक्चुअली वो एक कंप्यूटर ही शेयर कर रहे होते हैं सारे यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स, तो वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है टाइम शेयरिंग सिस्टम की वो एक एक प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एज वेल एज सेपरेशन ऑफ यूज़र प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम ज़्यादातर टाइम की बात करते हैं तो जो हमारा शेयरिंग टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है वो आपका टाइम स्लाइस शेड्यूलिंग बाय CPU होता है, बिकॉज दैट इज़ राउंड रोबिन. ओके, राउंड रोबिन एल्गोरिथम भी होती है. इफ़ इट इज़ कम इन योर सिलेबस देन आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. Now the second is your distributed operating system. Distributed operating system क्या होता है that you have to understand. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कंपटीशन अमंग द सेवरल
physical profession, and the procedures do not share memory or a clock. Instead, each processor has its own local memory. They communicate with each other through the various communication layers. So basically क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस में कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग कंप्यूटेशन होता है वो आपका सेवरल फिजिकल प्रोसेसर्स के बीच में होता है. जो प्रोसेसर्स होते हैं वो आपका शेयर नहीं करते, क्लॉक एंड क्लॉक का जो आपका होता है या जो आपका शेयर्ड मेमोरी होता है वो उसे शेयर नहीं करते. हर एक जो प्रोसेसर होता है उसकी खुद की एक लोकल मेमोरी होती है जो कि वो कम्युनिकेट करते हैं हर एक के थ्रू बाया कम्युनिकेशन लाइव्स. The second one, the third is your multi-user operation. Multi-user operation क्या होता है? Multi-user operating system, as the name implies, is supposed to serve multiple users at the same time. In other words, the operating system should be capable of running multiple user program. Each user is also called a task. Hence, multi-user operating system also called multitasking operating system. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो ये उसके नाम से ही वो बता रहा है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही है मल्टीपल यूज़र्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं एंड दैट आर सर्विंग टू द मल्टीपल यूज़र एट अ सेम टाइम. एक टाइम पे ही बहुत सारे मल्टीपल यूज़र को सर्व कर रहा है. In the other world, you can say that the operating system should be capable of running the multiple user program, even though each user is also called as task. हर एक यूज़र जो होता है वो हर एक यूज़र आपका टास्क कहलाता है. और मल्टी यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे ही हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हमने मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पढ़ा था इसी क्लास में, पहले टॉपिक कर चुके हैं, जो कि आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है. That is about multi-user operating system here. Now moving on with the next that we have here. विद रेफरेंस टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेशन सिस्टम, हम देखते हैं कौन कौन से सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. ओके, सो द फर्स्ट इज योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम उससे ही पहले इट इज़ लोडेड इनटू द memory by operating system. Once program loads in memory, it start execution. तो program execution is what that before the execution of that program, पहले ही execution of program के पहले ही जब आपका लोड हो जाता है मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के, तब आपका एक बार प्रोग्राम अगर लोड हो गया मेमोरी में तब वो स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन को. So while in the program execution, where before executing the program, it is loaded into the memory by operating system. Once program loads in memory, it starts execution. That I had you explain. Next is your second one. This is second services that is provided by the operating system. तो सेकेंड सर्विसेज आपकी है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दैट प्रोग्राम इज
combination of input and output statement which executing the program it requires input output device. तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं ये एक ऐसे प्रोग्राम है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के, जहाँ पे का एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम जब इनपुट आउटपुट डिवाइस को रिक्वायरमेंट होती है. The next one that we have here it is error detection. एरर डिटेक्शन क्या होता है? पहला तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन था, सेकेंड आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन था, थर्ड इज योर एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन, एरर इज रिलेटेड टू द मेमोरी, CPU, input output device and is the used program. बेसिकली एरर डिटेक्शन क्या होता है? एरर जो कि आपका डिटेक्ट करता है, एरर एक रिलेटेड होता है आपका मेमोरी से, CPU से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से एंड इन द यूज़र प्रोग्राम. यूज़र प्रोग्राम जो है उसके अंदर आपका मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड होता है. मेमोरी इज़ फुल, जैसे ही अगर आपकी मेमोरी फुल हो गई है, स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, या फाइल नॉट फाउंड, डायरेक्टरी एंड एग्जिस्ट, and of course printer is not reading ready, attempt to access illegal memory are the examples of error detection. So in the case of the error detection where you can face memory is full, a stack overfull, file not found, directory and exist, and of course the printer is not ready, attempt to access illegal memory are these are the examples of error detection here. Now next is your fourth, that is your file and directory operation. फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन की बात करते हैं तो देन यूज़र वांट्स टू रीड एंड राइट द फाइल एंड डायरेक्टरी. फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन तब आपका होता है जब यूज़र को रीड करना होता है या राइट करना होता है फाइल या डायरेक्टरी में. The next one is your fifth one, that is your communication. What is communication? With reference to the communication, communication may be inter-process communication and any other type of communication. Data transfer is one type of communication. कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इवन दो एट एनी अदर टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन, दूसरे टाइप का भी कम्युनिकेशन हो सकता है. और डेटा ट्रांसफ़र जो हम करते हैं फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन. Next is your virtual machine. What a virtual machine that we have to understood here. In the case of the virtual machine architecture, जिसे हम VM architecture भी बोलते हैं, VM आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो कि वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर होता है. इन अ प्योर वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स ईच प्रोसेस द इल्यूजन दैट इट इज़ ओनली प्रोसेस. तो ये आपका, अगर मैं बात करती हूँ प्योर वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर की, तो वो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक हर एक प्रोसेस को एक इल्यूजन देता है कि वो एक इकलौता प्रोसेस है प्रोसेस करने के लिए आगे for the machine, and the user writes an application as if only its code were running on the system. तो वो एक यूज़र को जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ये बताता है कि सिर्फ उसका ही एकलौता आपका ही एक कोड है जो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका रन करेगा. ओके, OS जो है वो आपका रन करेगा, सिस्टम जो है वो आपका रन करेगा, बट ऐसा नहीं होता. दैट इज़ एन इल्यूजन. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ वर्चुअल, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वर्चुअल मशीन where there is an application की बात करते हैं तो we have a system window and virtual hardware. इसके पास भी होता है. With reference to the application, then we have a Unix and virtual hardware, then application Linux and virtual hardware. With a reference to the application, virtual hardware and application, तो virtual hardware आपका with related to the, चाहे वो Linux सिस्टम हो, Unix सिस्टम हो, चाहे Windows सिस्टम हो, दोनों के लिए virtual hardware होता है एप्लीकेशन के साथ. उसके साथ साथ तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. हार्डवेयर की बात करते हैं तो आपका CPU है, मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है. दिस इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो वर्चुअल मशीन का ये होल डायग्राम है दैट यू कैन मेक इट आउट एंड देन यू कैन रिमेंबर easily what is virtual machine and what are the assumption and the illusion that were taken by the user given by the virtual machine operating system that is represented as virtual machine architecture here. ईच यूज़र इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. हर एक यूज़र जो है वो इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर के साथ बाय टाइपिंग कमांड्स टू द वर्चुअल मशीन ऑन अ वर्चुअल सिस्टम. कैन be
receiving the results back from the machine as soon as they are computed. तो अगर हम बात करते हैं हर एक यूज़र की, तो हर एक यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, चाहे वो टिपिकली कमांड के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो वर्चुअल मशीन के सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम के, चाहे फिर वो आपका जो रिसीव करता है रिजल्ट बैक मशीन, जो जैसे जैसे आप कंप्यूट करते जाते हो वो भी आपका रेफरेंस करता है विद बाय ईच यूज़र एज इन जनरल ऑफ वर्चुअल मशीन. ईच वर्चुअल मशीन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर. हर एक वर्चुअल मशीन का उसका खुद का एक सेट ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर होता है, जैसा कि रैम है, सीपीयू है, एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी. These were the hard set of virtual hardwares upon which an operating system and application are loaded. जिसके ऊपर आपका operating system का application loaded होता है. The operating system creates the illusion of multiple processes. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है मल्टीपल प्रोसेसर्स का, ईच एग्जीक्यूटिंग ऑन इट्स ओन प्रोसेसर विद इट्स ओन वर्चुअल मेमोरी. तो ये हर एग्जीक्यूशन जो होता है आपका हर एक प्रोसेस पे, वो आपका एक वर्चुअल मेमोरी पे रन करता है. The main components of the virtual machine, the virtual machine का main component है, that are the control program conventional monitor system, that is CPCMC, remote spooling communication, and the third is interactive problem control system, that is IPCS. तो बेसिकली मेन कंपोनेंट्स आपके क्या है वर्चुअल मशीन के. पहला है आपका control that are the control program conventional monitor system, remote spooling communication, and interactive problem control system. These were the main components of virtual system that we are going to discuss here. Now in the next class we'll start discussing with next new topics that are coming related to your operating system here, with reference to time sharing system that we had discuss here. And class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that maximum and many people can get the information at once, and they can also enjoy the video and get the knowledge that you are getting it. Thank you.